Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about the difference between class and static method, global and local variable, and like some small oops concept of. Okay, so let me just start with it. So first we see that what kind of method are there in class in Python. So how many type of methods? So we'll see this. How many type of methods are present in class in Python? First we have instance method, then first argument is self, can access object data plus class data. Okay, and then we have the class method, use the decorator at the rate class method. First argument is CLS, used to access modify class variable or other alternative constructor. Use decorator either it's static method, no self or class, works like a normal function inside a class, used for utility or helper logic. Okay, so instance method यूज होता है फॉर ऑब्जेक्ट लेवल पर, क्लास मेथड होता है फॉर क्लास लेवल पर, स्टैटिक मेथड हेल्पर पर, नो एक्सेस टू क्लास और ऑब्जेक्ट. सो लेट अस जस्ट सी दिस. फॉर एग्जांपल लाइक इसमें रीड तो आपने कर ही लिया होगा. लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टेंस मेथड. सो लेट्स से आई हैव डिफाइंड दिस क्लास पर्सन. Okay, so inside this I'm defining a function greet. So it is taking the argument as self. If the first argument is self, then it is a instance method. So here I have written define greet self and then return hello. Okay, तो एक चीज़ और देखनी थी मुझे. अगर मैं इसमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा उसका. एक तो मैं like for example I define here a is equals to 2. ठीक है, और मुझे आई नीड टू चेक दैट अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है इसमें तो क्या मुझे वो सेल्फ में भी लिखना पड़ेगा या नहीं. लेट मी जस्ट सी दैट. p इज इक्वल्स टू पर्सन अकेले कॉल कर सकती हूँ. यस, p डॉट ए तो मैं कॉल कर ही नहीं सकती बिकॉज इट इज़ नॉट एन इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, अगर तो फिर इसको फ़ायदा क्या हुआ डिफाइन करने का. कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना, बिकॉज जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल होता तो क्या होता है. ये इंस्टेंस वेरिएबल आर डिफाइंड ऑलवेज बाय सेल्फ डॉट कीवर्ड. तो होता सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू 2, राइट. सो दैट वुड बी दिस. सो अब मैं पी डॉट ए को कॉल भी कर सकती थी, बट यहाँ पे ए लिखना पड़ता. person has no object attribute a p. okay, p is equals to person and p dot a इसको मैं कॉल नहीं कर सकती. अगर मैंने पहले p डॉट ग्रीट को कॉल किया, लेट सपोज, अब मैं कॉल कर सकती हूँ p डॉट a को. yes, now I can call I need to erase this. मुझे कंफ्यूजन दूर करनी है थोड़ी. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ठीक है, एक चीज़ आपने देखी, मैं p डॉट ए को तभी कॉल कर पा रही हूँ जब मैं p डॉट ग्रीट को कॉल कर रही हूँ. बट अगर ये मेरा कंस्ट्रक्टर में होता तो मैं इसे कॉल कर लेती. तो हम क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट को तभी कॉल किसी वेरिएबल को तभी कॉल कर सकते हैं
तब जब वो इंस्टेंस वेरिएबल हो एंड इट इज़ डिफाइंड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. We can access only those variables outside the class which are instance variable and define. इससे मतलब नहीं है कि इसका एज आर्ग्यूमेंट भी पास करना है या नहीं, ठीक है. एंड डिफाइन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. You can access variable outside the class only if they are instance variable. The class both can be accessed outside the from outside. For example, only if their instance variable create inside accessing from outside. Obj is equals to a print obj dot x. Only if they are instance variable, we can those variable outside the which are inside the constructor. Class variables defined at the class level, not inside the constructor. Accessing from outside, yes, it is possible. Correct statement is variable that are public, not starting with underscore, ठीक है. क्लास वेरिएबल को वेदर इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स. Can be accessed from outside. Variable that are public whether instance variable or class variables. ओके तो भाई इसको अगर कंस्ट्रक्टर में होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती. जैसे अगर ये होता ना डिफाइन डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर like if it would be that ना. Why is it showing this? जी एरर के दिखा रहा है. INIT में कुछ रिटर्न नहीं लिखते हैं हम बिकॉज इसलिए. पी डॉट है मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर. और जो हमारे क्लास के वेरिएबल है उनको भी हम ऐसे ही कॉल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया एस इक्वल्स टू 9, ठीक है. तो मैं इसको भी ऐसे ही कॉल कर सकती हूँ. वी कैन एक्सेस क्लास वेरिएबल आउटसाइड द क्लास.
सिंपली। और किसे कॉल कर सकते हैं हम? अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी। हाँ, यस। व्हाट अबाउट प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ये भी पूछना है मुझे। आई हैव जस्ट कंफ्यूजन। व्हाट अबाउट protected and private variables? Protected and private variable. So protected can also be accessed, can also be accessed if they are getting called using object dot underscore variable name and obj dot underscore class name डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम, राइट? मतलब ऐसे हो तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो वही है प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल। कैन अ क्लास वेरिएबल भी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एज वेल? कैन अ क्लास वेरिएबल be protected or private variable as well? Okay, so class variable can also be public, protected or private. This is saying this, like for example, this is a new thing. So for example, अगर मैंने ऐसे अंडरस्कोर एस करके डिफाइन किया, ठीक है, एंड आई डिफाइन दिस पी एस पर्सन, ओके, तो मुझे पी डॉट अंडरस्कोर एस करके कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अब मैं इसे प्राइवेट कर देती हूँ, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, I have defined this by using p dot underscore class name डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम, ठीक है। तो पब यानी कि क्लास वेरिएबल कैन ऑल्सो बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सो आई कैन से दैट क्लास वेरिएबल कैन ऑल्सो बी public. Just a second, guys.
Yeah. Class variable can also be public, private, or protected. ठीक है. उसके अलावा we can call only those variable outside the class directly, outside the class directly if they are instance variable. अभी हमने जो जो चीज़ें सीखी है मैं बस लिख रही हूँ. We can only call those variable outside the class directly, which are first is instance variable, and defined inside the constructor, and then second is which are instant variable. Second is if they are class variables. थोड़ा सा ना ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं. ठीक है. और एक और चीज़, we can't write return statement inside the constructor. When we can't write return statements in constructor. Okay. And the next thing is नहीं, इसे बाहर नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है ना, इसे बाहर फिर कॉल नहीं कर पाएंगे. नहीं, मैंने बताया ना एट्रीब्यूट एरर आएगा. Can you explain me the concept of class variable, global variable, and method variable in Python? Can you explain me the concept of class variable, global variable, method variable in Python? Global variable can access global variable. These are the variable not defined outside the class and outside any function, accessible everywhere inside class, inside functions. But if you want to modify them inside a function, you need the global keyword. Okay. Inside the but outside any method shared by all object of the class can be accessed using class variable, class name dot variable or object dot variable.
Basically, for class variable we can say that we can define them outside and they are accessible everywhere मतलब inside the class as well. Yeah. Class variable can define outside, accessible everywhere. Global variable डिफाइन आउटसाइड एक्सेसिबल एवरीवेयर डिफाइंड इन क्लास शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ डिफाइन करते हो हर जगह एक्सेसिबल है, क्लास में डिफाइन करते हैं और शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड वेरिएबल डिफाइन, ठीक है, डिफाइन इनसाइड अ मेथड टेम्परेरी डिसअपियर्स आफ्टर द मेथड एंड्स। और ग्लोबल वेरिएबल को अगर हमें चेंज करना हो तो हमें ग्लोबल कीवर्ड डाल के चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसका भी मैं इतना ही बता रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी क्या कहते हैं क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अभी यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। नाउ विल डिस्कस इन अनदर वीडियो class method and static method, and after that we will do one question as well. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.